A very warm welcome to your students. Hope that all of you are fine. So, today I'm again with you with the latest guest paper. So, hope that your preparations are going good and now you will just focus on these very important questions which I am providing to you so that you will obtain 70 out of 70 in theory, inshallah. So, first of all, in this chemistry paper, there will be four sections, and you already know that. Section A, B, C, and D. Section A, it will carry seven questions, which will carry 1 mark each, so total 7 marks. Similarly, section B, it will contain six questions, each carrying 2 marks, so that's total of 12 marks. Similarly, section C, it contains total 12 questions and each carrying 3 marks, so total of 36 marks. Similarly, in the section D, there will be three long answer type questions, each carrying 5 marks, so total 15 marks. So this is your total 70-mark question paper. So let's start with the section D, which is very important, very long answer type question. So in section D, your first question, it is gonna to be asked from the unit solution. So chapter number second, solution. That is, the topic will be Rolle's law. It's very important. Rolle's law. It is. I hope you have already studied for volatile and non-volatile solute. Similarly, the next topic, that is ideal and non-ideal solution here. Similarly, numerical on molarity and molality, it is gonna to be asked. This is very important. On these topics, you have to actually keep the man focused. Similarly, next is the colligative property. You will just focus on elevation in boiling point and calculation of molecular or molar mass from that. And if you have time, then you will also study relative lowering in vapor pressure. So then next question, it is gonna to be asked from the P block, and you already know the various important industrial processes which are actually gonna to be asked. One is the Haber's process, similarly contact process, right? So sometimes the diagram is here asked preparation and properties of these ammonia and sulfuric acid. Similarly, interhalogen compounds, they will be very important. Their classification structure, right? Yes, and uses properties. And anomalous behavior, sometimes it's asked that of nitrogen or oxygen, group 15 or 16. And similarly, you should be able to write their electronic configuration. Then the next question, it is actually gonna to be asked always from aldehydes, ketones and carboxylic acids. तो यहाँ पे आपकी preparation and properties of aldehydes and ketones, similarly preparation and properties of carboxylic acids. जैसे कुछ most important यहाँ पे properties है, जैसे nucleophilic addition reaction of aldehydes and ketones, similarly nucleophilic addition followed by elimination. जैसे कुछ important reactions है, aldol condensation है, Cannizzaro reaction है, तो ये कुछ important रिएक्शंस है जिन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए. सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आते हैं, एसिडिक नेचर है, सिमिलरली HVZ रिएक्शन है, तो ये आप देख लेंगे. यहाँ पे सेक्शन सी पे आ जाते हैं. तो सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है सॉलिड स्टेट से, तो सॉलिड स्टेट में जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो तो पॉइंट डिफेक्ट सी है, शॉर्ट कैन फ्रेंकल डिफेक्ट पूछा जाता है. सिमिलरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप देखेंगे, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, एटसेट्रा. Similarly, next question from electrochemistry, that is the Colruy's law, gonna to be asked, very important, its application. Similarly, Nernst equation and Faraday's laws, first and second. Similarly, next question from chemical kinetics, that is order and molecularity, you should know. Similarly, Arrhenius equation, that is the effect of temperature here, very important. And from the surface chemistry, you will study lyophilic, lyophobic salts, electrophoresis, coagulation. These are important topics here. Similarly, physisorption and chemisorption. And next question, that is from general principles and processes of isolation of elements. You know, here are some important processes, you will principles which you will remember. Just roasting, calcination, smelting, refining of metal will be important. Just you should be able to know the ores of metals like aluminum, zinc, copper, right? And how to extract these. And next is the P block elements, and here from the P block elements you will remember the oxidation state of nitrogen oxides, right? Oxides of nitrogen. Similarly, oxoacids of phosphorus and sulfur, they will be important, you will remember these. And from the D and F block elements, here will be asked
that why these transition metals they form colored ions, colored complexes, and their catalytic properties, why they are used as catalysts. You have to give the reason. And similarly, KMnO4, its preparation or uses, some properties you will remember here. This will be important. Similarly, from alcohols, phenols, and ether, you will be asked preparation, few preparations for alcohols or for phenol. Similarly, just for example, we are preparing phenol from cumene. It's very important reaction. Similarly, alcohols you can prepare from alkyl halides, isn't it? We are having various important NAM reactions here. I hope that you will remember these. Similarly, Williamson's synthesis, that is the preparation of ether. And from organic compounds containing nitrogen, you will just study classification of amines, and test how to identify actually primary, secondary, tertiary amines by Hinsberg reagent. And diazotization, benzene diazonium chloride, that will be very important. Its properties are also important. From biomolecules, you will study classification of carbohydrates, right? Yes, similarly, glucose, fructose are here important, and amino acids and proteins. Protein, structure of protein, right? Primary, secondary, tertiary, and quaternary. From polymers, you will just remember the monomers of various polymers. Few preparation from the monomer you can easily prepare, and also the uses of monomers, just Dacron, nylon 6, nylon 6 addition, condensation, polymer. Similarly, copolymer क्या होता है ये पता होना चाहिए. केमिस्ट्री ना एवरीडे लाइफ में आप देखेंगे इन टॉपिक्स को. एंटीबायोटिक्स है, एंटीसेप्टिक्स है, डिसइंफेक्टेंट्स है, एंटीपायरेटिक्स है, सिमिलरली एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव या सोप एंड डिटर्जेंट, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही इसमें. फिर आते हैं सेक्शन बी, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से. तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्राइमरी, सेकंड एंड टर्शियरी, है ना. बैटरीज यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे गैल्वानिक सेल है, ये पूछा जाता है. लेड स्टोरेज बैटरी. कोरोजन, ये देखेंगे क्या होता है, कैसे प्रिवेंट करेंगे. केमिकल काइनेटिक्स से हाफ लाइफ पीरियड आपको आना चाहिए निकालना फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सिमिलरली फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, यहाँ पे आप याद रखेंगे यूजेस ऑफ KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, है ना. और कौन सा ट्रांजिशन मेटल जो है कलर्ड होगा, कलरलेस होगा, आपको ये आना चाहिए. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी आनी चाहिए. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप देखेंगे लिगेंड एंड इट्स टाइप, जैसे हमारे पास बहुत सारे लिगेंड्स है, मोनोडेंटेट है ना, एम्बीडेंटेट, ये देखेंगे. यहाँ पे आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा. हमारे पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना. ये आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रेट लिंकेज आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर्स, तो बहुत से इनको आप देखेंगे अच्छे से. हेलो अल्केन, हेलो अरीन में से आप सिंपली यहाँ पे इस सेक्शन में यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स देखेंगे. क्लोरोफॉर्म, DDT है, फ्रेऑन, है ना. हमारे पास आयोडोफॉर्म है. सिमिलरली ये कुछ नैम रिएक्शंस है. यू ऑलरेडी नो व्हाट्स रिएक्शन, व्हाट्स फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, इजंट इट. सेक्शन ए पे आ जाते हैं. तो इसके लिए भी मैंने बनाया आपको कहाँ से क्या पूछा जाएगा. सॉलिड स्टेट से आपका पहला ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है. इसमें सिंपली किसी वक्त यूनिट सेल पूछा जाएगा, किसी वक्त क्रिस्टलाइट्स पूछा जाएगा, किसी वक्त आपको पूछा जाएगा यहाँ पे वाइट क्या है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल. समटाइम्स ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपको पूछा जाता है कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर क्या होता है. किसी वक्त आपको पूछा जाएगा नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स इन सिंपल यूनिट सेल, है ना, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर. और सरफेस केमिस्ट्री से जो इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो टाइप्स ऑफ सॉल, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ physical state of dispersed phase and dispersion medium. You will see all these types. Alcohol, phenol, ether, amines, इसमें से किसी वक्त IUPAC नाम आपको किसी भी कंपाउंड का पूछा जाता है, ये आपको दिया जाएगा, तो आपको आना चाहिए. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन से आइसोसाइनाइड टेस्ट किसी वक्त ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाता है. आपको रिएक्शन दी जाती है, प्रोडक्ट बताना होता है. बेसिसिटी से पूछा जा सकता है. सिमिलरली एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोई भी दी जाती है, इसको कंप्लीट करना होता है आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, राइट. सिमिलरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है. इसमें IUPAC नाम आपको आना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का. बायोमोलिक्यूल्स में से विटामिन पूछे जाते हैं ना, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, या कोई भी विटामिन आपको दिया जाता है तो उसका केमिकल नाम आपको आना चाहिए, जैसे विटामिन B1, B2. अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसमें अल्डोल कंडेंसेशन कौन दिखाएगा, कौन नहीं दिखाएगा, इस पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है. कैनेजोरो रिएक्शन भी है ना, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जा सकता है. तो आई होप दैट ये पूरा आप अच्छे से कर लेंगे जितना मैंने बताया, एंड यू विल गेट 70 out of 70 इंशाल्लाह. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.